हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी रोल इन पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों में क्या रोल है ऑक्यूपेशन थेरेपी का। लेट्स स्टार्ट। बैकग्राउंड यानी इंट्रोडक्शन। इन पीडियाट्रिक्स ओटी प्ले a vital role in supporting the development and daily functioning of children. Pediatric occupational therapists help children participate in meaningful activities unlike occupation, जिसे हम ऑक्यूपेशन भी कह सकते हैं एक प्रकार से बच्चों का, अप्रोप्रिएट टू दियर एज एंड डेवलपमेंटल लेवल, जो उनकी एज है उनके अकॉर्डिंग। की रोल ऑफ पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशन थेरेपी डेवलपमेंट सपोर्ट, इन्हांस फाइन मोटर स्किल जो कि हम पढ़ चुके हैं, राइटिंग सब बटनिंग कैसे लाते हैं, क्या क्या यूज़, सपोर्ट ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन या फिर स्किल वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं बैलेंस क्लाइम में, promote sensory processing and integration of children in with sensory sensitive, इसे हम पढ़ेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। डेली लिविंग स्किल जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एडियल्स भी कहते हैं, हेल्प चिल्ड्रन लर्न सेल्फ केयर टास्क सच एज ड्रेसिंग, फीडिंग, टॉयलेटिंग एंड ग्रूमिंग टास्क जैसे सच में होता है कपड़े पहनना, फिर खाना खाना, टॉयलेटिंग मतलब टॉयलेट वॉशरूम को यूज़ करना, एंड ग्रूमिंग मतलब साफ सफाई, ये अपने बालों को कंघी करना, कॉम करना। जस्ट कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल स्किल, support visual, motor integration and problem solving ability, help student with attention, memory और organization challenges, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं अपने चैलेंज को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हैं। सोशल एंड प्ले स्किल, असिस्ट इन डेवलपिंग सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले, especially for children with autism or social difficulties. Encourage imaginative and cooperative play, वो जिसे वो कोऑपरेटिव करें, जो इमेजिनरी भी हो सके उनके लिए। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, उनके इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं आसपास की चीज़ों का। अडॉप्ट होम और स्कूल सिटिंग to better meet a child's need. Collaborated with teacher and caregivers to support classroom participation. Collaboration and workmanship, work closely with families, teacher and healthcare providers. Advocated for services, accommodation and individualized education plan, जिसे IEPS कहते हैं। Assistive technology and adaptive equipment, recommended tool to improve function like specialized intelligence and writing aids, help children use equipment for mobility or communication when needed. Common condition treated, autism हो गया, attention deficit, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसे ADHD कहते हैं, CP सेरेब्रल पाल्सी, डेवलपमेंटल डिलेज, डाउन सिंड्रोम, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर SPD, लर्निंग डिसेबिलिटी LD, और भी हैं। ये हमारी मोस्ट कॉमन थी और इसी में जो एक्सपेंड और रोल ऑफ पेडियाट्रिक ऑक्यूपेशन थेरेपी कंप्रेसिव असेसमेंट,
Occupation therapy assists a child's physically, physical, emotional, cognitive, sensory, and social development. This include standardized assessment, Peabody development, motor scale, sensory profile, 50 second ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग प्ले एंड डेली रूटीन्स ऑब्जर्वेशन करते हैं उनके जो डेली एक्टिविटीज़ और प्ले रूटीन का पेरेंटल एंड टीचर इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड चैलेंजेस टू एंड टू होम एंड स्कूल उनके पेरेंट्स से बात करते हैं कि उनके चैलेंज क्या क्या आ रहे हैं स्कूल और होम में कंप्रेसिव असेसमेंट ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट असिस्ट अ चाइल्ड physical, emotional, cognitive, sensory, and social development in this include standardized ओके 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 कोई नहीं चलिए आगे देखते हैं इंडिविजुअलाइज इंटरवेंशन प्लानिंग ओटिस के क्रिएट कम customized intervention plan based on the child strength need and goals ओटी क्रिएट करता है उन बच्चों के अकॉर्डिंग उनकी क्या नीड है उनके क्या गोल्स हैं लाइक मोटर स्किल डेवलपमेंट करना है या सेंसरी इंटीग्रेशन करना है सेंसेशन के लिए यूज करना है या उनके बिहेवियर या एडाप्टिव या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें उन्हें अदर चीज़ें यूज करना है उसके अकॉर्डिंग थर्ड है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या है चिल्ड्रन विद सेंसरी प्रोसेसिंग इशू may overreact or undefined to stimuli, touch, sound, movement, or help by using sensory diet, a structured schedule of sensory activity, creating controlled sensory environments, helping children regulate their sensory response. Oh no, sorry. No, okay. School-based support in educational setting, occupation therapy promote participation in classroom activities, modify tasks and environments, sitting, lighting, writing tools, support handwriting, attention and transitions between tasks. Early intervention. Early intervention age के 0 to 3 years 3 करते हैं for infant and toddlers with developmental delays. Therapists provide in-home and clinic-based service. Focus on bonding, feeding, sensory motor development, and early communication. Support parenting incorporate to therapeutic activity in daily routine. Play-based therapy. Play is a primary occupation of child. तो आप लोगों को भी पता होगा ओटिस यूज प्ले टू बिल्ड मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल ऐसे प्ले कराते हैं जिनसे उनके मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल डेवलप हो देन encourage problem solving and social interaction then provide a fun and motivation contact for therapy parent and caregiver training आप उनके पेरेंट्स और केयरगिवर को क्या क्या ट्रेनिंग दे सकते क्या बताते हैं और एजुकेट एंड ट्रेनिंग फैमिलीज ऑन थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ टू यूज एट होम कैसे यूज़ करेंगे थेरेपेटिक एक्टिविटी स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज बिहेवियर एंड प्रमोट स्किल इनके बिहेवियर को कैसे मैनेज करेंगे सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड सेटिंग उनके बिहेवियर को ट्रैक करेंगे क्या प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे ट्रांजिशन प्लानिंग एज अ चिल्ड्रन एज
Otis with help developing free vocational and self-management skills, preparing for transition to school and adulthood in older children, supporting independence in community participation. Holistic approach. Occupational therapists take a holistic and child-centered approach. In inclusion in nature environment, families involvement and double empowerment, developmentally appropriate and goal driven activities, models of practice in pediatric occupational therapy. कौन कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं ऑक्यूपेशन थेरेपेटिक फ्रेमवर्क के लिए देखते हैं। नंबर एक, मोहो मोहो का फुल फॉर्म मॉडल ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन। दूसरा, पो प्यू पर्सन इन्वायरमेंट ऑक्यूपेशन। नंबर तीन, एरेस एस आई सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। डेवलपमेंटल frame of reference. Use acknowledge to development milestone to guide therapy. Bio can biomechanical approach. Focus on physical capacity such as strength, endurance, and range of motion. Intervention techniques to occupational therapy. Use a wide range of techniques and tools such as handwriting without tears, a milestone, multisensory circumvention handwriting, neurodevelopmental treatment, treatment NDT, facilitate normal movement pattern in children with motor impairment, therapeutic listening and auditory integration training, enhance sensory processing through sound, visual motor integration tool, activity and game that support eye hand coordination, technology and intervention, pediatric OT, virtual reality VR and augmented reality AR, tools for therapy, encouragement, engagement and motor learning, iPad and tablets, apps for fine motor, cognitive and communication development, teletherapy, telehealth, especially important in rural or unreserved areas, robotic and exoskeleton for motor rehab and children with physical disability, family centered and culturally sensitive participants. OT collaborate closely with family and form culture values and parenting style. Build goals that reflect family priority. Provide education in the family's preferred language and learning style. Recognize culture attitudes toward disability and intervention. Mental health and emotional regulation. OT support children with anxiety, depression, and trauma through play therapy, emotional regulation strategies, and sensory coping tools. Intervention often include mindfulness, social emotional learning, SEL, and safe space for emotional expression, advocacy, and policies. Your paragraph OTs advocate for children access to service, accommodation, and inclusion also school and communities. They contribute to
Individual Education Plan (IB) and 50504 plans. Advocate for early screening and intervention under public health policy tax. Emerging areas of participant feeding and eating intervention for pickle eaters, child with oral motor delays or sensory aberration. Or ASD intervention emphasizes routine transition, regulation and social skills support for foster and adopter child, focusing, focusing on attachment trauma and development delay, gender affirming co-care of transgender and gender disabled youth, encourage sharing inclusive supportive environment and identity affirming skill. Research and evidence-based practice. Pediatrics body use clinic research to inform decision. Inappropriate evidence-based therapy intervention for specific children conditions. COPOP approach and for CDCD. Participate in research, study data collection, outcome management, apply goal attainment scaling GAS to track individual progress. Thank you. Your attention and question, text me and comment, like, share, subscribe my channel. Thank you.